नमस्कार आपण मानक समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। आज वीडियो में आपण सहित +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 3 यूनिट 4 मेजर डिबेट्स किसी 2 मार्क्स क्वेश्चन आपन सह शेयर करबी। मैं पूर्व मध्य यूनिट 1 2 3 ऑलरेडी 2 मार्क्स क्वेश्चन और 1 मार्क्स क्वेश्चन बनी सारी। जदि आपन देखि नांती ताले चैनल रो प्लेलिस्ट रे अछि जाई देखिदेबे। आ वीडियो आपको मैं कहबी जे आपन माने यार पीडीएफ को किपर भाबे पाई परिबे। तो चलନ୍ତୁ स्टार्ट करबा। What is an obligation? An obligation बा दायित्व गोटे कौन ना an obligation can be defined as something that one must do because of a law, necessity of because it is their duty. An obligation can be defined माने कौन ना गोटे obligation बा दायित्व can be defined बा परिभाषित as कौन something that one must do because काहे जने करछि कारण गोटे law माने आईन नेसेसिटी माने आवश्यकता और बिकज इट देयर ड्यूटी कारण तार ड्यूटी जो से करछि दायित्व। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओब्लिगेशंस मध्ये वेरियस फॉर्म अछि सच एज लीगल ओब्लिगेशन, मोरल ओब्लिगेशन इटीसी जस्ट एज राइट्स भली अधिकार भली ओब्लिगेशंस प्ले ए वाइटल रोल इन द सोसाइटी माने अधिकार भली ओब्लिगेशन मध्ये गुड कोन हम समाज रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रोल करछि प्ले करछि। नेक्स्ट व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशंस द पॉलिटिकल ओब्लिगेशन बा राजनीतिक दायित्व सब को ग्राउंड्स में को विषय को आधारित। पॉलिटिकल ओब्लिगेशन रिफर्स टू द मोरल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू ओबे द लॉ ऑफ देयर स्टेट कौन मोरल ड्यूटी माने नैतिकता जो सब दायित्व रही करेंगे नागरिक मैंने आउ ओबे द लॉस ऑफ देयर स्टेट राज्यर बा स्टेट जो सब लॉ बा आईन अच्छी मानवा। आउ कौन कौन अच्छी ना इन केसेस वेयर एन एक्ट और फॉरबेरेंस that is required by the law is morally obligatory on independent grounds. Political obligation simply gives the citizen जो राजनीतिक दायित्व सिंपली माने नागरिक मान को सिंपली माने साधारण भाव में कौन रोचे ना an additional reason for acting accordingly. नेक्स्ट देखिए what is meant by political obligation माने कौन political obligation राजनीतिक दायित्व माने कौन ना political obligations refers to a moral requirement to obey national law ना कौन national law को सब मानिबा requirement जहाँ से रही। its origins are unclear however it traces to ancient Greeks। तो ancient Greeks रो ये कौन traces है। the idea of political obligation is philosophical focusing on morality law of the rather than justice. what is the problem of political obligation? तो political obligation में समस्या कौन कौन रही in the abstract. The problem of political obligation is easily stated. It is to reconcile the authority of the state, reconciliation पुनः with the autonomy of the individual. The state has authority over its citizen as a consequence of their autonomous decisions. Consequence माने कार्य जो फलाफल देर जो ऑटोनोमस माने स्वयं निष्पत्ति नौचंदी देर कंसेंट सम्मत द रिकन्सिलिएशन इज कंप्लीट एंड द प्रॉब्लम सॉल्व जो सब रिकन्सिलिएशन हम समस्त परस्पर मिसिकी गोटे समस्या समाधान करेंगे। नेक्स्ट देखिबा व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन। तो पॉलिटिकल ओब्लिगेशन थ्योरी कौन कौन रही। पॉलिटिकल ओब्लिगेशन इज द वन वी वे ड्यूटी बाउंड टू फॉलो बिकॉज ऑफ इट्स सोर्स एंड आवर रिलेशनशिप टू इट। Theories of political obligation fall into 5 general sorts. 5 general sorts माने किसम रो अछि 5 प्रकार रो अछि consent, gratitude, consequent सम्मत gratitude, fair play, association and natural duty. What is moral obligation? तो moral obligation माने कोन moral obligation is an obligation arising out of the concentration of right and wrong माने भूल ठीक रो जानिबा concentrate करबा। It is an obligation arising from ethical motives or a mere conscientious duty. Next, unconnected with any legal obligation, perfect or imperfect, संपूर्ण और असंपूर्ण, or with the receipt of benefit by the promisor of a material penicularly nature. Penicular nature माने अर्थसंगत प्रकृति आर्थिक प्रकृति मतलब हम कहि परिबा अर्थगत प्रकृति मतलब हो। What is defined right theory? तो defined right theory माने कौन ना प्रकृत थ्योरी माने कौन रही अधिकार प्रकृत सिद्धांत कौन इट एडवोकेट्स दैट द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय गॉड एंड गवर्न इट्स डिप्यूटी माने कौन कहना स्टेट को भगवान निर्माण करछन्ती आ गवर्न बाय हिज डिप्यूटी। द रूलर वाज डिवाइनली अपॉइंटेड बाय गॉड जी जो रूलर जो अच्छी
सी माने भगवान ताको अपॉइंटेड करछंती एंड ही वाज एजेंट ऑफ गॉड से भगवान गोटे दूत एंड ही वाज रिस्पांसिबल फॉर हिज एक्शंस टू गॉड एलोन आ से जंकर जति सब दायित्व भगवान को जो एक्शन करछंती ता सब के दायित्व की रहबे ना भगवान रहबे as the ruler was the deputy of God obedience to him was held to be a religious duty and residence is sin what is consent theory the consent theory माने कोन it says that the authority of the state is based on consent of people माने लोक माने समतरे गोटे से अथॉरिटी जो हिची स्टेट रो से हिची sanction of political obligation is the will of the people have made a control with a person or body or person under which that person or body receives authority in return for the protection and service of declaring and enforcement a system of legal rules. What is a prospective, traditional and conservative theory? माने prospective से विधि व्यवस्थाकारी आउ ट्रेडिशनल परंपरागत आ कंजर्वेटिव में रक्षणशील सिद्धांत कौन ना पॉलिटिकल अथॉरिटी इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ एस्टैब्लिशिंग कस्टमरी राइट्स Jane Boyden says that as the authority of a patriarch is based on the fact of historical persecution, so the authority of the king, जे कि head of the state, finds its source of a fact or long position. The people obey the rules because the fact of obedience has become like a well-established convention. नेक्स्ट व्हाट इज आइडियलिस्टिक थ्योरी तो आदर्शगत सिद्धांत कौन ना मेन इज ए पॉलिटिकल एंड रैशनल क्रिएचर माने मनुष्य कौन ना गोटे पॉलिटिकल रैशनल क्रिएचर विचार वक्त गोटे क्रिएचर एंड स्टेट एक्ट्स ए सेल्फ सफिशिएंसी कम्युनिटी इट फाइंड्स द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द मोरल नेचर ऑफ मैन व्हाट इज मार्क्सियन थ्योरी माने कौन द स्टेट वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग कैपिटलिस्ट क्लासेस माने स्टेट कौन कर लो जो कैपिटलिस्ट लोक अच्छे जो इंटरेस्ट विरुद्ध सपक्ष काम कर जो लोक मैंने एक्सप्लोरिंग कर शोषण कर दे अपोज्ड एंड एक्सप्लोटेड मासेस हैव नो ऑब्लिगेशन टू द एक्सिस्टिंग बोर्जेस पॉलिटिकल ऑर्डर आ से कौन कर जो बोर्जेस क्लासेस अच्छी सब जो ऑब्लिगेशन अच्छी से मानवा को मना कर नेक्स्ट देखिए they must need to overthrow such type of political system they must revolt against oppressive method adopted by the capitalist government तो ये कौन है ना जो स्टेट वर्क्स फॉर इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्लोइटिंग कैपिटल क्लासेस तो कैपिटल लोक मैंने कौन ताके सब वर्किंग क्लास एक्सप्लोइट कर शोषण कर स्टेट मतलब इंटरेस्ट काम कर दी अपोज एंड एक्सप्लोइटेड जो लोक जनसाधारण मैंने शोषण हो दमन होती से कौन ना नो ऑब्लिगेशन टू एक्सिस्टिंग बोर्जेस पॉलिटिकल ऑर्डर माने बोर्जेस लोक मानकर किसी माने जो ऑर्डर रही से मानवे ना आउ कौन दे मस्ट टू यूनाइट टू ओवरथ्रो सच टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दे मस्ट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव मेथड्स अडॉप्टेड बाय द कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट जो दमनमूलक सब जो ये मेथड्स अप्रोच होती तार एगेंस्ट कि वर्किंग क्लास पीपल माने रिवोल्ट बा विद्रोह करेंगे यह कौन मार्क्सियन थ्योरी व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी तो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी माने कौन ना यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी माने बेंथम प्रोपाउंडेड माने कौन विचार पाई बा प्रतिपादित द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म द पीपल हु डेराइव टू यूटिलिटी फ्रॉम द स्टेट शैल बी ओब्लिगेड टू ओबे द लॉ गवर्नमेंट वाज ए ड्यूटी टू द पीपल फॉर एक्साइटिंग लॉयल्टी एंड ओबीडियंस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओबेइंग द स्टेट माने स्टेट रो सुविधा कौन कौन रही देखिबा obeying the state undoubtedly असंदेह भाव has its own advantage निज सुविधा किसी रही it creates a regulatory framework for work behavior which instead helps to the citizen to enjoy appreciable level satisfaction appreciable प्रशंसनीय hence through obeying the state we guaranteed इच अदर राइट्स तो स्टेट कौन कर समस्त राइट को गारंटेड कर अधिकार को सी गारंटी कर स्टेट समस्त अधिकार को गारंटी भाव से प्रदान कर व्हाट इज रैशनैलिटी एंड यूजफुलनेस लॉ तो रैशनैलिटी एंड यूजफुलनेस लॉ माने कौन ना रैशनैलिटी माने कौन चेतना आ यूजफुल कार्यकारिता तो कौन ना पीपुल
will ready to obey laws. People लोक मैंने कौन ना आईन को मानने को ready थांती. If they are found to be rational and useful, जब से कौन ताकर चेतना किसी भल अच्छी और ताकर कार्यकर्ता मत किछु ताहले से माने आईन को कौन मानने पे सब ready थांती. Law is only a means to an end and not an end itself. People will gladly obey. People will gladly obey माने खुशी रे मानवा. Law if they prove themselves to be useful instrument of a human welfare. जब people मानते जे एटा हाँ एटा जो आईनटा होची हम पई से जनसाधारण को भल रहउची ताहा से माने खुशी रे मानंती ताहा को rationality and usefulness law बोली कहि परबा. What is legitimacy? Legitimacy माने कोन बा विधि संगत हम कहि परबा. A law is obeyed माने मानबा rules by citizens if its source is legitimate. This is means that the government which makes law should be constitutional and legal. People will revolt against the laws made by tyranny who has absolute power. Who coined the term civil disobedience and why? The term civil obedience माने जो सिविल नागरिक मान आदेश उल्लंघन कौन से ना सिविल द टर्म सिविल ओबीडियंस वाज coined by Henry David Thoreau in his 1848 essay to describe his refuse to pay the state poll tax implemented by the American government to prosecute माने जो कार्य मोकदमा चलछि से प्रोसिक्यूट कहछथि ए वार इन मेक्सिको एंड इन्फोर्स एंड फॉगिटिव स्लेव लॉ. फॉगिटिव माने जो भगोड़ा स्लेव माने जो थांती जो नौकर माने बा गुलाम लॉ. What is UDHR? The UDHR was the first international document that spelled out the basic civil, political, economic, social, cultural rights and human beings should be enjoyed. The declaration was ratified without opposition by the UN General Assembly on December 10, 1948. Under human rights treaties, governments have the prime responsibility for the protect and promote human rights. Government कौन रही ना प्रथम रक्षा कवच ह्यूमन मनुष्य मान अधिकार आ कौन पे ना प्रमोट ह्यूमन राइट्स आ प्रमोट कर जो अधिकार सब रही ह्यूमन राइट्स. व्हाट इज ह्यूमन राइट? तो ह्यूमन राइट जो अधिकार कौन? Human rights are the basic rights and freedom of all human. It includes the rights to life मान बंचवार अधिकार, liberty स्वतंत्रता, freedom of thought मान भाई पारिबे, expression express करि पारिबे and equality before law आईन आगे समस्त समान. It is unified, interdependent and indivisible. Next देखिबा who developed idea of cultural relativism and what is the meaning of cultural relativism. माने जो cultural relativism दा अछि सेटा को किए माने गोटे आइडिया थिला कहार आइडिया डेवलप करथले आ तार अर्थ कोन ना द आइडिया ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म वाज अडॉप्टेड बाय फ्रांस बोस 18 कोन 1858 टू 1942 इन 1911 तो 1911 मसिया से जो कल्चरल रिलेटिविज्म टा सांस्कृतिक जो रिलेटिविज्म टा रही से कौन है ना डेवलप होता क्या ना फ्रांस बोस को द्वारा 1911 में. कल्चरल रिलेटिविज्म इज द आइडिया दैट ए पर्सन बिलीव्स गोटे पर्सन कौन विश्वास करछि आ वैल्यूज एंड प्रैक्टिस शुड बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द पर्सन्स वन कल्चर निज कल्चर को से बेस्ड कर रादर देन द बी जज्ड अगेंस्ट द क्राइटेरिया टू अनदर. नेक्स्ट देखबा why did the conflict arise between the universal human rights doctrine and cultural relativism? The conflict between the universal human rights doctrine and cultural relativism came about during the establishment of universal human rights doctrine 1914. तो जो universal rights जो बसिला लोक मानकर universal human rights जो रहिला मत द्वारा से जो स्थापित होला केबे 1948 मसिया से आसी कोडा ना जो universal human rights doctrine आसी आ द conflict across due to theory that there was some kind of dominance over some cultures and that the universal human rights doctrine came from European or Western philosophy. तो European Western philosophy दर्शन हो से सब आछि. This doctrine was the universalist approach to human rights that placed value on individuals. The term tolerance is derived from which Latin word and what does it mean? जो टॉलरेंस टा सेना गोटे कोन लैटिन वर्ड आसी आ तार अर्थ कोन द टर्म टॉलरेंस इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉलरेट
टॉलरेट इट मीन्स एंड्यूर टू और बेयर विथ माने सहन करबा। नेक्स्ट कौन देखा व्हाट डज मल्टीकल्चरलिज्म रिफर्स टू। तो मल्टीकल्चर बहुसांस्कृतिक कौन रिफर करछि मल्टीकल्चरलिज्म रिफर्स टू कल्चरल डाइवर्सिटी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता arising from the extents of two more groups with a society due to the racial entity language difference whose beliefs and practice generated destination sense of collective identity. It implies a positive endorsement of communal diversity. Next देखिए racial माने से हमको जातीय होला। What does cultural plurality refers to? Cultural plurality refers to diversity in people, attitudes, beliefs, symbols, and values, etc. These are acquired through learning rather than through inheritance. What is meant by pluralism? बहुदलीय माने कौन ना pluralism माने बहुत कहि परिबा बहुलता। Pluralism refers to the beliefs of common diversity, multiplicity. It also champions a theory that power in modern societies it is widely and evenly distributed. तो इला यूनिटी 4 रो किछि 2 मार्क्स क्वेश्चन जदि आपण यार पीडीएफ चाहते डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम लिंक अछि से जॉइन हंतु आपण सदा माने पीडीएफ मिल जबो। एही परि वीडियो पे आपण मन चैनल जोड़ी जानतु। थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।